Good morning, class. I am Hemlata Ma'amobes, and this is class 12 biology. And we are understanding the competency-based questions of human health and diseases. This is question number 1 in front of you. The diagram shows replication of retrovirus in the host. Note and answer the following questions. Fill in the missing box labeled 1 and 2. Why is it named as retrovirus? And why the virus is being replicated and released? Does the infected cell survive? This is the question. So you know the HIV life cycle is given in your syllabus in this chapter, and HIV is a retrovirus. So you have to tell the answers. Firstly, you have to complete the filling the missing box in the flow chart of the life cycle of the retrovirus. So retrovirus virus infect the normal cells. You can see the virus is entering the normal cells. The viral RNA introduced into the host cell, reverse transcription occur, and from RNA, the viral DNA will be produced. So here the step will be viral DNA will be produced. And by reverse transcription. So viral DNA is produced. Second is the viral DNA incorporated into host genome. Then second label, what will happen after this? Then the viral DNA will be transcribed to produce viral proteins that will be there. RNA produced DNA by reverse transcription and is the genetic material of the virus. So RNA is producing the viral DNA, it has been produced, and new viral particles will be produced in the infected cell. This will be the second answer. And the viruses come out of the host. पहले फिलअप में आपका वायरल डीएनए बना, सेकंड में आपके नए वायरस के आरएनए के पार्टिकल्स बन गए. यहाँ पर आंसर्स भी दिए हुए हैं. एंड नेक्स्ट RNA produced by the reverse transcription and is the genetic material of the virus. Virus का जो why it is called retrovirus. This is the question answer of that question, part B. The question B was why the HIV is called a retrovirus. Why is it named retrovirus? So answer is क्योंकि RNA produce करता है DNA को reverse transcription से और genetic material RNA होता है इस virus का, इसीलिए इसको retrovirus कहते हैं. Now what is the question C? We will move to question C. While the virus is being replicated and released, does the infected cell survive? जो virus replicate कर रहे हैं, release हो रहे हैं, तो infected cell survive करता है कि नहीं करता? That is the question. So infected cell survive जब इसमें virus replicate होता है, infected cell survive कर पाता है, and infected cells can survive. The second question. Now come to competency based question. As you should know that class 12, the percentage, the weightage of a competency based question is increased. So it is important to learn them. What is a recombinant DNA vaccine? List such vaccines. State their advantages. Recombinant DNA vaccine consists of plasmids, which is small circular DNA. So it is the DNA containing vaccine. Therefore, recombinant DNA is name given to the vaccine because it contains a small circular autonomous replicating DNA called plasmid, which is a small circular DNA. It contains a pathogen DNA to produce one or two specific proteins of the pathogen. So DNA vaccine contains the pathogen DNA, which is just producing two specific proteins of that pathogen. This DNA is inserted into the yeast or bacterial cells to utilize the machinery of the cells to generate pathogen polypeptides. So in us, the pathogen polypeptide is produced, and these vaccines can be used to stimulate organizations of the immune responses. Vaccines hence produced are used on a large scale. Hepatitis B vaccine, which is produced in the yeast, is introduced in us. Bird flu DNA vaccines are also there. Some of their advantages are these vaccines are always more beneficial than attenuated, the killed ones. So these vaccines are more beneficial than the killed ones, and they are distinctly pure and specific, evoke strong immune response. So immune response produced by them is very strong. That is the advantage. Now question number 3, what is the cancer?
What causes a normal cell to turn cancerous? How is it different from the normal cells? Cancer is an uncontrolled and abnormal division of the cells under certain conditions. Cancer uncontrolled abnormal division होता है cells का certain condition, कुछ conditions में genes जो होती हैं proto-oncogenes, cellular oncogenes जो होती है normal cells में, वो उनमें mutation होने की वजह से, वो transformation होने की वजह से cancerous बन जाते हैं. Following are the differences between normal and the cancerous cell. कुछ differences है normal और cancerous cell में. जब change हो जाता है, mutation हो जाता है, तो normal cells के अंदर normal cells have property to divide in a controlled manner, but cancerous cell has property to divide uncontrollably. Normal cell exhibit contact inhibition, but cancer cell display do not contact inhibition. Means normal cell after coming in contact they inhibit their growth. रुक जाते हैं वो, जब एक बार सेल नॉर्मल सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो ग्रो करना बंद कर देता है. कैंसरस सेल नहीं ऐसा करते. कैंसरस सेल कांटेक्ट इनहिबिशन डिस्प्ले नहीं करते और अनकंट्रोलेबली ग्रो होते हैं. इनका लाइफ स्पैन इंडेफिनिट होता है एंड नॉर्मल सेल का लाइफ स्पैन डेफिनिट होता है. डिटेक्ट द मेडिकल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग केस. स्ट्रॉन्ग हाइपर सेंसिटिविटी is seen in any patient displayed by a person when exposed to a few substances in the air. So this is a condition which is given. State a precautionary method to avoid such reactions. That a person is a strong hypersensitive person to any substance present in the air. So you should know the hypersensitive reaction is called allergy. The patient is allergic to a substance present in the air. Allergies are due to the release of chemicals such as serotonin and histamines. These chemicals have been released from the mast cells. As a result, allergy has occurred. One of the precautionary methods is to avoid contact and allergens present in the air. Is it advantageous to have identical twins for organ transplant? If yes or no, why? It is advantageous since the organ have the same surface markers. So twins is advantageous for the organism because organ and surface markers are same. And in case any organ transplant is required in the future, then the recipient will not detect the organ transplant or graft transplanted from the twin. Thereby, there will be no reaction against it. The immune system reacts killing the foreign tissues only if it detects the different surface markers. So this was the competency-based question of the human health chapter. I hope you have understood it. Now let us understand the competency-based question of the human welfare, microbes in human welfare. I have shared the screen. The ideal methodology. Discuss the main methodology crucial in the biological control of the diseases and the pest. Competency-based question. So it is of the chapter human health, microbes and in human welfare. It is chapter 9. It is chapter 8, sorry. And discuss the main ideologies of the crucial in the biological control of the disease and the pest. Fundamental idea is it is natural and eco-friendly. So biological control is controlling the organisms through other organisms, which are the hyperparasite of the organisms. And they naturally control the population, keep the pest population under the control. So what is the main key belief of this biocontrol? The question is asking that. The fundamental idea is natural and eco-friendly is the fundamental idea that this control is natural and eco-friendly. It involves the utilization of entities to monitor community, pest, and pathogen in an ecosystem. So in this setup, monitoring is done of community, pest, and pathogen in any ecosystem. Example, trichoderma is a fungus which is antagonistic against certain soil-borne pathogens. So trichoderma is acting as a biocontrol agent in the soil, and it is antagonistic. It stops the growth of another soil-borne microorganisms.
which cause disease, and likewise penicillium hinders the growth of staphylococci and hence can be used in penicillin production to check several bacterial pathogens. Example, first antibiotic penicillin that stop the growth of staphylococcus bacteria is also used to check the several bacterial pathogens. Baculovirus is a virus which belongs to the genus Nucleopolyhedrosis virus, and it is a biological control agent to specific species specific narrow spectrum insecticidal application. So it kills the insect, and it is very species specific also. Bacillus thuringiensis is also used to control the insects as biopesticide. Bacillus thuringiensis is also used as a biopesticide. The complete biological regulation of the pest is recognized to be much more advantageous in an ecological sensitive area. So यहाँ पर 3-4 नाम आपको याद करने हैं कि कम्युनिटी पेस्ट का लेवल में मॉनिटर होता है इकोसिस्टम में. पहला एक फंगस का नाम याद रखना है, ट्राइकोडर्मा, जो सॉइल बॉर्न पैथोजन के लिए बायो कंट्रोल का काम करती है. देन आपको पेनिसिलिन का एग्जांपल दिया है जो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को स्टॉप करता है. बैक्यूलो वायरस का आपको एग्जांपल दिया जो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रस वायरस की जीनस का है. ये स्पीशीज स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन लास्टली बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का नाम दिया है जो कि कंट्रोल करता है इंसेक्ट को एज अ बायोपेस्टिसाइड. What is the consequence of discharging larger volume of sewage that is untreated into river? And what if it is the sequence of anaerobic sludge digestion in sewage treatment? अगर वाटर को अनट्रीट रखा गया, डिस्पेंस किया गया डायरेक्टली इनटू द रिवर, तो इट विल लीड टू एडवर्स वाटर पोल्यूशन विद द पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआज, ऑर्गेनिक मैटर. तो यही कॉन्सिक्वेंस होता है अगर हम लार्जर वॉल्यूम के वाटर को सीवेज को अनट्रीटेड रिवर में डाल दें, तो वो पोल्यूशन करता है. इफ दिस वाटर इज कंज्यूम्ड इट वुड लीड टू आउटब्रेक्स ऑफ वाटरबॉर्न डिजीजेस. अगर इस वाटर को कंज्यूम कर लेगा कोई तो वो भी बहुत डिजीजेस से सफर करेगा. नेक्स्ट इज एनरोबिक. सेकेंड पार्ट का आंसर है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनरोबिक स्लज डाइजेशन. Anaerobic bacteria digest the aerobic bacteria and the fungi that are present in the sludge. Residual organic matter is anaerobic sludge digestion. During the digestion, a mixture of gas is produced such as hydrogen sulfide, methane, and carbon dioxide. And these biogases can be used for the source of inflammable because they can burn as a domestic fuel. So biogases are produced by these. So this is the significance that we can produce hydrogen gas, methane, carbon dioxide, biogas from the, because anaerobic bacteria can digest the aerobic bacteria and fungi. Describe the kind of food. Next question is this. Describe the kind of food that have lactic acid bacteria. Mention their applications. Lactic acid bacteria, LAB, which is short form, of the lactobacillus species is most commonly found in food items such as curd and yogurt. दही में और योगर्ट में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हम रात को दही थोड़ा सा दही डालते हैं गुनगुने दूध में और फिर वो इनिशिएटर की तरह काम करता है. माइक्रोब इसके अंदर होते हैं तो वो जल्दी जल्दी से ग्रो करने लगते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करके सूटेबल टेम्परेचर पे मिल्क को कर्ड में बदल देते हैं. एंड LAB रिलीजेस एसिड्स ड्यूरिंग द ग्रोथ कर्डल. The digest milk protein partially which thereby facilitate digestibility. LAB ने एसिड रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड, जो जिसकी ग्रोथ से मिल्क कर्डल हो जाता है, कर्ड में बदल जाता है, डाइजेस्ट कर देता है मिल्क के प्रोटीन को पार्शियली और फैसिलिटेट करता है डाइजेस्टिबिलिटी. मिल्क प्रोटीन अब डाइजेस्ट होने लगता है. फ्यू ऑफ इट्स एप्लीकेशन आर इनहैंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द मिल्क. B12 मिल्क का बढ़ जाता है and regulate the disease checking microbes in the stomach. और डिजीज करने वाले माइक्रोब्स को स्टमक में चेक कर देता है. तो हमने 3 क्वेश्चन समझे. एक तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का काइंड ऑफ फूड कर्ड में ये मिलते हैं और उनका यूजफुल एप्लीकेशन. हमने समझा डिस्चार्ज करना वाटर वॉल्यूम को सीवेज को रिवर में क्यों हार्मफुल है एंड सिग्निफिकेंस क्या है सीवेज ट्रीटमेंट का. इसलिए डिस्कस द मेन आइडियोलॉजीज क्रूशियल इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये हमने पढ़ा और कुछ एग्जांपल्स पढ़े जैसे ट्राइकोडर्मा, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोसिस वायरस में बैक्यूलो वायरस एंड
बैसिलस थ्यूरिनियंसिस बैक्टीरिया जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स की क्वालिटी रखते हैं। वहाँ हमने ह्यूमन हेल्थ चैप्टर में कैंसर के बारे में पढ़ा कि कैंसर सेल नॉर्मल सेल से कैसे अलग होते हैं एंड उनके डिफरेंसेस पढ़े। हम डिटेक्ट हमने पढ़ा हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी के बारे में कि कैसे हम अवॉइड करने से उसके कॉन्टैक्ट को बच सकते हैं एलर्जी रिएक्शन से। एंड आइडेंटिकल ट्विंस की क्या एडवांटेज होती है कि उनके सरफेस मार्कर्स और उनके आरबीसी सेम होते हैं बिकॉज दे जेनेटिकली सेम आइडेंटिकल ट्विंस। सो उनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता। इम्यून सिस्टम क्योंकि किल कर देता है अगर वो किसी भी ऐसे सेल को डिटेक्ट करता है जिसके सरफेस मार्कर्स अलग होते हैं, तो ट्विंस में नहीं कर पाता। और व्हाट आर द डीएनए वैक्सीन, ये हमने पढ़ा कि डीएनए वैक्सीन में एक छोटा सा प्लाज्मिड होता है जिसके पास छोटा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, जिसके अंदर पैथोजन का डीएनए होता है जो कुछ पैथोजेनिक प्रोटीन्स बना रहा होता है। एंड जब ये डीएनए वैक्सीन किसी ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट और बैक्टीरिया, then it uses the सेल्फ मशीनरी टू जनरेट पैथोजेंस प्रोटीन्स एंड उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होकर और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा देता रहता है। दो एग्जाम्पल दिए, हेपेटाइटिस बी डीएनए वैक्सीन एंड बर्ड फ्लू डीएनए वैक्सीन। पहला क्वेश्चन हमारा था लाइफ साइकिल पूरी करनी थी एचआईवी की, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप पे वो आरएनए से डीएनए बन रहा था एंड फर्स्ट स्टेप पे वो जो डीएनए बना है वायरस का वो होस्ट सेल में अटैच हो रहा था एंड सेकेंड स्टेप में न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस हो रहे थे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसका था कि हम इसे रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं, तो आरएनए कंटेनिंग वायरस को रेट्रोवायरस कहा जाता है क्योंकि उसका डीएनए बनाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह फिर वो होस्ट में ऐड हो जाता है। एंड इन्फेक्टेड सेल क्या फिर भी सरवाइव कर सकते हैं अगर वायरस उसके अंदर रेप्लिकेट हो रहा है, ये क्वेश्चन था। तो हमारा आंसर था यस, दे कैन सर्वाइव। सो हमारी क्लास पूरी हुई। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमने 2 चैप्टर्स के आज सॉल्व करे। With this, I would like to end the video. Like and share my channel. Thank you.